and general anesthetic. Anyone of you? Local and general. Please raise your hand. Those who know, please raise their hand. इस तरफ से You Second last row. First one. क्या होता है? इतने खुश क्यों हो रहे हो? नहीं आता इसलिए? हाँ? फिर? गैस तो करो. सब कुछ नाम में ही है. जिससे पूछा है वही जवाब देगा. जिसको आता है वो खड़े हो सकते हैं. कहां से आ रहे हो? गेट बंद कर दिया था ना, फिर आ गए. जल्दी आओ, फटाफट आओ और गेट बंद करो. अंदर से बंद करो. आयो सब लोग, आ जाओ. क्या था अभी तुम लोगों का? अभी क्लास थी. अभी ब्रेक था. तो ब्रेक लंबा कैसे हो गया है? गवर्नमेंट ऑफिस थोड़ा है. लंच ब्रेक 1 घंटे लगे. हाँ, अरे आओ भाई, बैठो. क्लोज द गेट. बंद करो इसको अंदर से. अब कोई नहीं आएगा. एंड दिस वन ऑल्सो. Yes, from this side. No. No. हाँ, इधर बहुत लोगों को पता है. Yes, you. Green shirt. हाँ, general is generalized to a part, whole body. So we give it generally. Basic difference. Please don't talk. Basic difference. Right. In which? Loss of consciousness. That is the basic difference. Loss of consciousness is the main difference between local and general anesthetics. ठीक है? If you want to do a local surgery in a outpatient department, like removal of the boil, that could be done. Tendal extraction, that could be done. ठीक है? छोटी मोटी जो सर्जरीज हैं, that could be done in local anesthesia. But in the case of major surgeries, we need general anesthesia. Why? पेन, और पेन तो लोकल में भी कम हो जाएगा. पेशेंट अवेयरनेस, राइट. और reflexes. Very good. Reflexes. Reflexes are very important. Whenever a patient is undergoing a surgery, अगर reflexes काम करते रहे तो patient can have tachycardia. इधर आओ, इधर आओ. क्या हो रहा है? हाँ, जाओ. लिफ्ट रुकी हुई थी.
लिफ्ट में क्यों गए थे? लिफ्ट में क्यों गए थे? लिफ्ट अलाउ नहीं है तुम्हें? लिफ्ट अलाउ नहीं है? पीछे आगे जाओ, प्लीज क्लोज द डोर, है ना? अगली बार टाइम पे आना। तो reflexes are the most important thing. Because of reflexes, patient can have tachycardia, patient can have sympathetic stimulation, vasoconstriction. If a patient is already compromised, if his heart is already compromised, then he can have a MI also. ठीक है? और patient can have cardiac arrest also. So reflexes, suppression of the reflexes is very important. ठीक है? What else? Who wants to be anesthetist? Anesthesia करना चाहता है कोई? हाँ? किसी को इंटरेस्ट है anesthesia में? Anyone? Raise your hand. No one? Why? Reason? Behind the scenes. They're always behind the scene. But they do their job well. We cannot perform a surgery without the anesthetist. They're very important. Also these days we have a role of intensive care units. ICUs are managed by only anesthetist or the medicine people. It won't be possible to manage an ICU without them. So they are very important part of our hospitals. So we'll read about the history, classification, function, pre-anesthetic medications. उनको बुला लो उनको. Mechanism of action. बोलना चुपचाप है, शोर नहीं होना चाहिए. So we'll read about the mechanism of action. There can be multiple mechanisms. We'll discuss them one by one. And commonly used agents. Fine. Please be on time next time. There's always a next time. So please maintain silence. History. Nitric oxide was discovered by, close the door, discovered by Priestley in 1776. First anesthetic agent which was used was nitric oxide. Then it was used by Horace Wells in 1844 for the dental extraction. Then next agent was ether. It was used in 1846 by William Morton. Gilbert Abbott was the first patient. Firstly they were used in the wars जहाँ पे requirement थी emergency operations की. So we started using them. Functions: facilitate surgery and painful procedures. क्या करेंगे? Analgesia. Please don't talk. Analgesia.
हट गया ब्लूटूथ. लास्ट रो. क्या हो रहा है? जिसको जाना है they can give the attendance and leave. I have no issue with that. जो क्लास में है वो. So functions. Analgesia means pain relief. Amnesia. What is amnesia? Loss of memory of the event. Loss of consciousness. Impairment of all the skeletal muscles. Patient become motionless. Otherwise, he'll struggle and fight. Then weakened autonomic responses. And it is reversible. Pre-anesthetic medication. What is that? Pre-anesthetic medication. The medication which is given before the anesthesia. क्यों देते हैं हम? Decrease secretions, right? And for sedation, for pain relief, to prevent the vomiting and amnesia and sedation. Also anti-anxiety effect. क्या होता है? जब भी हम anesthesia देंगे, there will be muscle paralysis. जब भी muscle paralysis होगी, so क्या होगा? जो प्रिवेंटिव रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर भी रिलीज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. तो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ वॉमिटिंग. और वॉमिटिंग से क्या होगा? दे कैन बी डिहाइड्रेशन. और डिहाइड्रेशन को तो आईवी फ्लूइड दे देंगे, ठीक है. और कोई इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी? डिहाइड्रेशन इज नॉट एन इमरजेंसी. पेशेंट को ऑलरेडी फ्लूइड दे रहे हैं. व्हाट इज एन इमरजेंसी? एस्पिरेशन. एस्पिरेशन मीन्स जो स्टमक कंटेंट्स हैं दे कैन गो इनटू ट्रैकिया एंड ब्लॉक द लंग्स एंड पेशेंट में die of hypoxia. ठीक है. So that is the main thing that we have to prevent. So how can we prevent it? Prevent the secretions with the help of anticholinergic drugs. Then prevent the vomiting with the help of antiemetics like metoclopramide, ondansetron. Prevent the acid secretion with the help of H2 blockers and proton pump inhibitors. And amnesia and anti-anxiety with the help of sedatives like diazepam, lorazepam. And pain relief is also with the help of opioids. Opioids are also very good pain reliever and they are also sedatives. ठीक है. So the classification of the anesthetic agents. They are divided into inhalational and IV agents. Inhalational में gas है and volatile liquids. Volatile liquids means they are liquids, but they are volatile. They get converted into gaseous form. That's why they all are inhalational agents. Gas is nitrous oxide. Volatile liquids are ether, halothane, anfluorine, isoflurane, desflurane. And IV agents are divided into inducing agents like thiopentone, methotrexate, and slower acting drugs. We'll read about them one by one. Then benzodiazepines, dissociative anesthesia. We'll read about this also. Opioid analgesia with fentanyl and neuroleptic analgesia, droperidol plus fentanyl. So we should know some basic things, otherwise everything is given in the book. We should know the basics. That is Mayer-Overton rule. What this rule says, if we increase the chain of the
anesthetic agent, chain length, then it is more lipid soluble and more potent. ठीक है? So the longer the chain of the anesthetic agent, the potency increases. So we'll read about the mechanisms one by one. First is GABA receptor complex. Anesthetic agents act on multiple pathways to cause anesthesia. Anesthesia, you know about hyperpolarization and depolarization, है ना? सेल के अंदर जो है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज. During depolarization, the negative charge decreases inside the cell and positive increases inside the cell, and the opposite for the outside. That is depolarization. So हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो भी एजेंट्स हैं, they are causing hyperpolarization, जिससे कि nerve conduction will stop. Depolarization होगा तो conduction will be faster, और hyperpolarization होगा तो conduction will be slower. So this is the GABA receptor chloride channel complex. It is made up of 5 subunits, 2 alpha, 2 beta and 1 gamma. यहाँ पे GABA एक्ट करता है between alpha and beta subunit, and benzodiazepine एक्ट करता है between alpha and gamma subunit. क्या करते हैं? They open the channel. This channel has chloride ion. This is a chloride ion channel. So when it opens, then chloride ion moves inside of the cell. उससे क्या होगा? Hyperpolarization, तो conduction कम हो जाएगा. कौन से एजेंट्स हैं? Barbiturates, benzodiazepines. They mostly act on this channel. Next is NMDA receptor. ये क्या होता है? It is also ion channel. ये ion channel increases the conductivity of the calcium and potassium, calcium and sodium and magnesium inside the cell. उससे क्या होगा? There will be depolarization. ठीक है? और potassium efflux को कम करेगा. So ultimately depolarization. So what we will do? We have to inhibit this channel. So those agents which will inhibit this channel are anesthetic agents like ketamine and hydroxide. ठीक है? Then there is a term called minimum alveolar concentration. Minimum alveolar concentration. Please don't talk. Minimum alveolar concentration. जब भी कोई एनेस्थीसिया हम देंगे किसी को, अगर हम कोई भी एजेंट देंगे उसको with the help of inhalation, तो it goes into the lungs and then through lungs it crosses the blood and moves into the blood and goes into the CNS and does its work by inhibition of the neuronal impulses. ठीक है? तो MAC is the concentration of the anesthetic in the alveoli that causes lack of mobility in 50% of the human subjects, which is seen by standard skin incision. तो वो डोज जो 50% ऑफ द इंडिविजुअल में एनेस्थीसिया कर दे, इमोबिलिटी कर दे, एंड इट इज टू बी टेस्टेड बाय स्टैंडर्ड स्किन इंसिजन. स्किन इंसिजन देंगे तो ही विल नॉट बी एबल टू, ही और शी विल नॉट बी एबल टू मूव हिज हैंड और लेग्स. ऐसा करते नहीं है. दिस इज अ हाइपोथेटिकल टर्म. ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि आपने पेशेंट को लिटा दिया और उसको जाकर ठीक है इतना हो गया. 2 पेशेंट लिटाया और एक को दिया तो ठीक है, 2 में से एक को हो गया तो ठीक है. ऐसा नहीं होता.
It is a hypothetical term just to compare the anesthetic agents. तो अगर MAC कम होगा मतलब क्या हुआ? ज्यादा पोटेंट है. अगर कम कंसंट्रेशन में इट इज मोर इफेक्टिव देन इट इज मोर पोटेंट. ठीक है. तो दैट यू शुड नो. देन ब्लड गैस कोफिशिएंट. ब्लड गैस कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा ब्लड में रहेगा या गैस में रहेगा? तो ब्लड गैस कोफिशिएंट अगर ज्यादा है मतलब it remains more in the blood and less in the other places. ठीक है. और कम हुआ तो less in the blood and more at the other places. ठीक है. So more action will be there. Here's third row. Third row. थर्ड समझ में आता है? आगे से खड़े हो आप लोग. खड़े हो. क्या हो रहा है इतनी देर से? कुछ भी चल रहा है यहां पे, तुम्हारा अलग ही है. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस शोर नहीं होना चाहिए. तुम्हें जो करना है करो. क्या हो रहा है यहाँ पे? यस यू. ब्लैक शर्ट. नहीं, पीछे वाला, पीछे वाला. और कहाँ पीछे देख रहे हो? हाँ, इतना स्टार्डम. ब्लश कर रहे हो. ठीक है. तो ब्लड गैस कोफिशिएंट किसने बिठाया? सो अगर कम है ब्लड गैस कोफिशिएंट मींस इट इज लेस soluble in blood, और ज्यादा है मतलब मोर soluble in blood. That means अगर लेस soluble है ब्लड में तो मोर विल बी इन द CNS एंड टारगेट टिश्यूज. सो रैपिड एक्शन एंड रैपिड रिकवरी. ठीक है. और अगर मोर soluble है ब्लड में दैट means late effect and late recovery. Then we'll talk about some agents like nitrous oxide. It was used earlier, not used nowadays. It is having good analgesic and amnesic properties, but its potency is very less potent, so not used nowadays. Then we have a term called diffusion hypoxia. Diffusion hypoxia. This is almost insoluble in blood. So क्या होता है? हो गया गेम पूरा? कौन सा गेम चल रहा है? बढ़िया, चलो. ये गिविंग ए टाइम है. पढ़ना तो वैसे भी पड़ेगा. एग्जाम आएंगे तब पढ़ना पड़ेगा. कभी तो पढ़ना पड़ेगा.
Don't waste your time. So, अब खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कम है, सामने खड़े हो, यहाँ खड़े खड़े भी बातें कर रहे हो, सामने खड़े हो, अभी सब दिखेगा. So, एंटीओ इज insoluble in blood. तो उससे क्या होता है? रैपिड अफेक्ट एंड रैपिड रिकवरी. रैपिड रिकवरी होगी तो इट मूव्स आउट ऑफ द एल्वियोलाई, ब्लड से सीधे एल्वियोलाई में जाएगा और साथ में अदर गैसेस भी लेके जाएगा. सो देयर विल बी डिफ्यूजन हाइपोक्सिया. और दूसरी चीज, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केसेस ऑफ एम्फाइजीमा एंड न्यूमोथोरैक्स. एम्फाइजीमा क्या होता है? हाँ, इट इज सेम एज COPD. ठीक है. तो इन द केस ऑफ तुमको भी आना है, तुम खड़े खड़े भी बातें कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें. It also causes vitamin B12 deficiency and it will be the cause of megaloblastic anemia and neurotoxicity. So we are talking about emphysema. Emphysema में क्या होता है? There will be bulle. There will be lot of bulle. Mainly patients who are long-term smokers, old smokers, who are smoking since 20-30 years. Their lungs were expanded, hyperinflated, and air trapping is there. So what will happen? There will be air trapping, air remains in the lungs, there will be less gaseous exchange, and that causes the formation of bulle. Bulle क्या होता है? There will be air trapping and it will be the क्या होगा? Tissue होगा और वो expand हो जाएगा. It will be bulle, just like balloon. And when we will give the nitrous oxide due to rapid recovery जो होगी, diffusion hypoxia होगा, उसकी वजह से बुल्ले can damage, और वो डैमेज होंगे तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. न्यूमोथोरैक्स इज ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी. ठीक है. सो इट इज अवॉइडेड. Then ether, it is also an older agent, not used nowadays because it is highly inflammable and explosive. So we cannot do cautery along with it, because in surgery we have to keep cautery along with it, because if a vessel get damaged, then we have to use the cautery. Then cyclopropane, it causes arrhythmia, so not used commonly. Chloroform, it is highly hepatotoxic. Trichloroethylene, it also causes arrhythmia because sensitizes the myocardium to adrenaline. Halothane, also not used so commonly. It is non-explosive and non-irritant. It causes hepatotoxicity and arrhythmias, attack metal and rubber tubes. इधर आओ, सामने आओ, यहाँ पे खड़े हो.
बैठने होगा बोला मैंने, बैठ जाओ, बैठ जाओ. So, Anfurine, it is also hepatotoxic, so we can see most of them are hepatotoxic. But it is not used in epileptic patients because it causes epilepsy. E for enflurane, E for epilepsy. So you can remember it. Desflurane is used for outpatient surgeries. Then methoxyflurane, it has high nephrotoxic potential. Isoflurane, then moving on to the thiopentine. It is used most commonly for outpatient surgeries. It is an inducing agent. ठीक है? It produces anesthesia within 1 minute. Also rapid redistribution. What is rapid redistribution? Right. It is highly lipophilic, so it moves from blood to the tissues and then moves back from the blood to the brain very fast and then moves back from the brain to other tissues. So action will be short lasting. It can also precipitate acute intermittent porphyria. So contraindicated in the case of porphyria. Propofol recovery is very rapid, least residual effect, also antiemetic action. Then benzodiazepine, you know about it. Ketamine, it produces dissociative anesthesia. It is a drug of abuse by the most anesthetist because it causes no loss of consciousness plus analgesia and amnesia. Means patient is conscious and loss of pain, loss of the memory of the event. So people used to abuse it. They inject it and keep on enjoying for 1 or 2 days and then come back to the senses because it causes hallucinations also. So something is not there, he or she can see it. There is no tactile stimulation but they can feel it. There is no visual stimulation but they can feel it. They can have sounds. ठीक है? So this is the reason for abuse. Patient is in a trance state and leaves the memory. After 1 or 2 days when he or she comes to senses, then they don't have any memory of the event. ठीक है? It also increases heart rate and BP, so used in shock and avoided in hypertensive patients. It is also preferred in asthma patient because it causes bronchodilation, so can be used in asthma patients. Painful OPD procedures like burn dressing because there is very good analgesic action, so can be used in painful dressings and in the case of shock. Then opioid analgesic agents. Opioids, as we all know, are very good painkillers. ठीक है? अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो we give opioids. आपका एनेस्थेटिक हो गया ना? हो गया आपका? हाँ. So we used to give tramadol can be used as an analgesic.
Whenever a patient comes to you and if he or she is in a severe pain, you can give the painkillers like NSAIDs you can give. If not control, then you can add the tramadol. You can add the opioid agents that will give a better relief and faster relief. But amnesia is poor. The loss of memory is not there with the opioids. So we have to add a neuroleptic agents along with it. Neuroleptic are mainly antipsychotic drugs. So they cause the amnesia. That is known as neurolapt analgesia, because we add a neuroleptic along with the opioids. Droperidol is usually added. Also sometimes N2O is added, known as neurolapt anesthesia, because N2O is an anesthetic agent. तो क्या साइड इफेक्ट हुआ एनेस्थीसिया के? गैग रिफ्लेक्स इज लॉस्ट. क्या होता है गैग रिफ्लेक्स? क्या होता है गैग रिफ्लेक्स? क्या होता है? तो क्या होता है? नहीं, बंद नहीं होता. गैगिंग, यू मस्ट हैव हर्ड. गैगिंग इज द सेंस ऑफ वॉमिटिंग. ठीक है. गैग रिफ्लेक्स इज प्रिवेंटिव रिफ्लेक्स. तो गैग रिफ्लेक्स अगर नहीं होगा तो क्या होगा? पाथवे पता गैग रिफ्लेक्स की? याद है किसी को? एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना? पढ़ा है ना? याद नहीं है? पढ़ के आना. हाँ, कौन सी नर्व? और इफ्रेंट कौन सी होती है? दोनों वेगस होती है. पढ़ के आना. पढ़ के आना. ठीक है. नॉशिया, वॉमिटिंग, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा. देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ वॉमिटिंग. वॉमिटिंग होगा तो रिफ्लेक्स हो सकता है. रिफ्लेक्स होगा तो एस्पिरेशन हो सकता है. ठीक है. हाइपोथर्मिया, it lowers the set point where the vasoconstriction occurs, so patient can have hypothermia. ठीक है. So warming fluids can be given to the patient. This is all about the anesthetic agents. ठीक है. जिसको कोई भी query है, they can ask me.